Hello friends, today we will discuss about formatting tag used in HTML programming. माने प्रोग्रामिंग HTML प्रोग्रामिंग रे formatting tag आमे कोन कोन यूज करछु. formatting tag कोन माने फॉन्ट बा अक्षर को केमिता सुंदर भाव लिखिबा, केमिता स्टाइल लिखिबा, कलरिंग नहीं खाली अक्षर रो डिजाइन केम चेंज करि परिबा. ताके हम कोन कहूचे formatting tag. HTML formatting elements or tags. First one is bold, strong, italic, emphasize text, mark text, strike text, big for bigger font, small text, deleted text, inserted text, subscript text, superscript text, marquee text, typewriter text. Apart from that, there are lots of formatting text are available in HTML. But we will discuss common used formatting tags in HTML. Let us discuss one by one. Starting with bold and strong text. B stands for bold text and strong tag stands for important text. Both are looking similar, but there are very small difference between two. Starting with bold, in HTML, B tag define the bold text without any extra importance. That means after extra importance nine. Example कहला B, this text is bold, end with S/B. That means it is a pair tag. Similarly, strong, the HTML strong element or tag define the strong text with added semantic strong importance. That means it has become importance. This text is strong /strong. So example of strong text. मुझे example उटे program करी देखो जो program रे each one करी देखे मुझे मानूँ को suppose ये मोर formatting tag उटे file खोली चे ताज़र मुझे गोटे उरकी insert करी भी. मु सब जिन लिखी क्या भर कही बॉडी भर लिखी बोली. स्टार्टिंग विथ बी. सपोज मोटे एग्जांपल लिखी it is for bold. Another one I will do it for strong. Pause Now I have written two statements, one for bold, one for strong. Director Technology is providing online tutorial for HTML programming. Class B, strong. Director Technology is providing online tutorials for HTML programming. Strong. Now we will see what will be the output. Suppose I am opening this one. It will say Director Technology providing online tutorial for HTML. Again same thing. So I need a new line. मोर के नुआ लाइन गोटे दरकार से कौन करी गोटे कमांड अच्छी कौन br एटा को नेक्स्ट ट्यूटोरियल पढ़िया br काम कौन br माने कौन होला नुआ लाइन पे. सपोज ताकि मु पुणी आउट रन करी मोर आउटपुट देखो केमती आछी. बोथ आर लुकिंग एक्जाक्टली सेम. दीटा समान भाव देखा तार डिफरेंस कौन दीटा भितर तार बोल्ड आउ स्ट्रॉन्ग डिफरेंस कौन बेसिक डिफरेंस बोथ आर अपियर सेम
bold tag stand for bold while strong stand for highlighted. The difference between these two HTML tags is not often obvious at first glance as both are shown in bold print the most of the browser. Most of the browser रे कौन हम दुईटा को समान वाला देखा जाती. But according to W3 concept, W3 stand for World Wide Web Consortium, only bold tag must be displayed in bold, while this is optional for strong tag. Strong tag may be bold देखा जाए पारे, may not be bold देखा जाए पारे. In practice, however, this actually makes no difference. Practically कौन दुईटा के भीतर difference किसी नहीं. पुराना ब्राउजर माने यूज करते कौन बोल्ड, बट नुआ ब्राउजर माने कौन यूज करते स्ट्रांग. नाम दुईटा टैग्स वाला बोल्ड और स्ट्रांग. Next two tags are italic and emphasize text. Both are again looking same type. Both italic and emphasize tags are looking same. I stand for italic tag. The HTML I element defines the italic text without any extra importance. This text is italic. Similarly, EM stand for emphasize text. This HTML EM tag defines the emphasize text with added semantic importance. मतलब प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंस टिके रहउची. बेसिक डिफरेंस नहीं. जैसे क्या डिफरेंस बिटवीन इटालिक और एम्फासाइज टैग द डिफरेंस कौन. बोथ आर टिपिकली स्टाइल टू डिस्प्ले एज इटालिक, बट सब बेले बेले EM यूज व्हेन वी वांट टू पुट मोर स्ट्रेस ऑन द वर्ड और फ्रेज. गोटे वर्ड ऊपर कौन स्ट्रेस दवा चाहिए तापर कौन यूज करबा EM. बट इटालिक वुड बी यूज व्हेन यू डोंट नीड टू स्ट्रेस ए वर्ड और फ्रेज but do want it to be different from the word around it. माने कौन मोर स्ट्रॉन्ग मोर इम्पोर्टेंट दरकार नहीं, बट से लेटरटा कौन दरकार बा से वर्डटा दरकार कौन अन्य मान अलग हवा दरकार. सेतेबेले मु कौन करिवि यूज करिवि कौन आई. फॉर एग्जांपल व्हेन यू माइट यूज इट टू इंडिकेट एन अल्टरनेटिव वॉइस. आर प्रोग्राम कर देखिबा केमता आछी बोली मु समान एग्जांपल को देखे देखे चलीबी. सब क्या भर रखा बॉडी भर रखा हो. आई प्लस आई EM प्लस EM. BR stand for new line. फाइल सेव करवा. सेव कला पर कौन करवा उधरे रन करवा. बहुत तालुक एग्जैक्टली सेम. डिफरेंस किसी नहीं, खाली सिमेटिक प्रोग्रामिंग डिफरेंस अच्छे. ओल्डर वर्जन यूज करे कौन आई, न्यूअर वर्जन यूज कर HTML कौन EM. Similarly, next three tags are mark, big and small. Now coming to mark, the HTML mark element define mark or highlighted text. This is HTML mark example mark formatting good example तारो. Similarly big and बड़ा बड़ा font देखिया पे चाहिए भाई older version bold आउ big आउ small older version of HTML use करा होता है वर्तमान पे कि use करना थी. It states that the enclosed text should be displayed in a bigger font. माने बड़ा बड़ा अक्षर देखा जाएगा. Big, this is an bigger font. Similarly small, it specifies that the enclosed text should be displayed in smaller font. Small, this text are in smaller font slash small. आर भी गोटे एग्जांपल देखे तो अच्छे small और big एग्जांपल कौन हो. Now come back to next our program. Control C. प्रथम लिख दो कौन big mark test होता है. One for mark test.
सपोज मु छोटिया एरियाटा को मार्क प्रोवाइड करने चाहूँगी सपोज ये जार कौन लिखिदेली मार्क प्लस मार्क दैट मीन्स एतिक लाइन से कौन देखेब मार्क करके देखेब मुझे सेव करके रन करने चाहिए आउटटा केमती आसो स्लैश मार्क लिखी मार्क एंडटा कौन हम स्लैश मार्क ये भूलटा करते बोले सब जगह कौन होगा मार्क टेक्स्ट पड़े आसाला हाँ इफ आई रन दिस to look like this is a bigger font, this is a smaller font, and this is the marked font. Suppose I want to put some more space between these lines, so I need to put 2 BR. This is a smaller font, this is a bigger font, this is a marked font. Now coming to the next font, next tag. Next tag is, now we have already discussed bold tag, strong tag, italic, emphasize, mark, big and small. Next coming to next set of tag, underline text and inserted text. Both are looking exactly same. Both are coming with underline text. Then you specify that the enclosed text should be underlined. These text are in underline text. Example, inserted text. It specifies that the enclosed text should be inserted for display like underline text. Example, ins. These text are inserted text /ins. ins is semantic tag. Again, programming style of tag होते. अब यह नुआ फॉर्मेट माने यूज करचंती, बट यू टैग होतला पुराना HTML फॉर्मेट माने यूज करथले. It denotes an element which has been inserted while you gives the engine the instruction to render the element as underline. Again, both are looking exactly same. One is old way of writing, one is new way of writing. This is the only difference between these two. One is u, it will be end with /u. Similarly, ins /ins. If I save it and again I run it, it will look like this. Both are will come with underline tag. Again, next type of tag is strike and delete. Again, both are looking same. One is deleted text, one is strike text. The HTML delete tag or DL element define the deleted or removed text. It appears in the browser in striking through the text. Example, DL. This text are deleted text /DL. Strike. The enclosed text should be displayed with a horizontal line striking through the text. Example, strike. This text are strike text /strike. Both appear same but handled differently. These may mostly appear the same but could be handled differently by the screen reader or the other accessibility tool. The DL may be ignored completely, but that means not read out, whereas strike may be read out but differentiated from the normal text. माने कौन होला both are तीटा के देखिया पे समान, but जदि आमे कौन से टूल अच्छी जे कि कौन करे हम स्क्रीन को रीड करि परिबो, से माने कौन करिवे डिलीटेड टेक्स्ट को कंप्लीट इग्नोर कर दे, माने रीड भी करिवे नहीं.
स्ट्राइक टेस्ट कौन कराहब ताको रीड करिवो बट से कौन करिवो डिफरेंशिएट करिवो काठारु नॉर्मल टेस्ट पाखरु मात्र एतिक डिफरेंस अछि बट दीटा कापियर कौन करिवे सेम भलिया तो प्रोग्राम में देखि दबा केमति करा होछ बोली TL end with slash TL strike str strike slash I'll save it then run it both are coming with both are looking exactly same दिजन जाक न होती exactly same रो देखा जाउछन्ते ये कौन हो अक्षर पूरा स्ट्राइक आसुच्छी डिफरेंस कौन होला दी जन भितर जदि कौन रीडर आम स्क्रीन को रीड करुचे से डिलीटेड टेक्स्ट कौन करिवो कंप्लीट इग्नोर करिवो बट स्ट्राइक टेक्स्ट कौन करिवो रीड करिवो बट डिफरेंट वे रे नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट टेस्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट SUP it specifies that the enclosed text should be displayed as superscripting using the smaller font ता माने कोला जो ऊपर जो लेखा सुपरस्क्रिप्ट रहइबो से स्मॉल छोट छोट अक्षर देखा जिवो दिस इज एग्जांपल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट x SUPY /SUP सिमिलरली सबस्क्रिप्ट कोन अक्षर तळे छोट अक्षर लेखा हुए it specifies that the enclosed text should be displayed as a subscripting using smaller font मान छोटो अक्षर तळे लिखा हो दिस इज एग्जांपल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट x SUP SUB आर एग्जांपल टा तुम देखे दउची गोटे एग्जांपल देखे दवा दैट मीन्स ए लाइन रे एते कोन आसीबो सुपरस्क्रिप्ट एग्री आ ए पोर्शन कोन आसीबो सबस्क्रिप्ट एग्री रन करियो चाहि मु कोन आसला एटा ऑनलाइन टा कोन आसला सुपरस्क्रिप्ट एग्री प्रोग्राम टा कोन आसला सबस्क्रिप्ट एग्री नाउ कमिंग टू द लास्ट टू MARQ and typewriter test. MARQ means moving text. Suppose I want to move some text from throughout the screen. That may be vertical, that may be horizontal. First example to MARQ. Surrounding element blink the web pages. Blink using escape navigator. Suppose I am using an escape navigator. That time instead of MARQ I will use blink. ता माने कोन हला मु के कोन यूज करछि गूगल क्रोम यूज करछि मो ब्राउजर जदि मु एस्केप नेविगेटर ब्राउजर यूज करबी तबे MARQ सपोर्ट करे नै से कोन सपोर्ट करे blink यू और एग्जांपल कोन हला MARQ दिस टेक्स्ट आर MARQ और मूविंग टेक्स्ट /MARQ सिमिलर टेक्स्ट कोन हला टाइपराइटर टेक्स्ट का पूर्व टाइपराइटर हमर थला ता टेक्स्ट दे मोर आउटपुट देखिया पई चाहिबी ता पई यूज करबी कोन ट्री टेक्स्ट. This teletype element specifies that the text should be rendered in fixed with typewriter font. Example कोला TT these texts are displayed in typewriter font /TT. और example टा देख दो कोन आछि
Similarly typewriter ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ TT/TT. Now I'll save it. I'll run it. It is a Mercury test. It is a TT test, typewriter type test. Now we have discussed all the formatting test tags that is used for programming. Thank you.